20 minutes before landing, suddenly captain announces, Ladies and gentlemen, your attention please. This is your captain speaking. We will be making an emergency landing in about 20 minutes. It may be necessary to evacuate the aircraft after landing. The cabin crew will now instruct you on the procedures to follow. Request your cooperation. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको पता है कैबिन क्रू सिर्फ 90 सेकंड्स में सारे पैसेंजर्स और खुद को एयरक्राफ्ट से सेफली बाहर निकाल सकता है और ट्रेंड होता है टू सेव लाइव्स, प्रोटेक्ट द एयरक्राफ्ट एंड रिमेन काम व्हेन एवरी सेकंड काउंट्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। चलिए पहले समझते हैं कि ये प्लान्ड इवैक्यूएशन एक्चुअली होता क्या है। हर बार इवैक्यूएशन का मतलब कोई सडन एक्सीडेंट या सडन इमरजेंसी नहीं होता। कभी-कभी प्रॉपर प्रिसीजन के साथ पायलट्स और कैबिन क्रू मिलके इसे प्लान तरीके से भी करते हैं टू कीप एवरीवन सेफ। हो सकता है आपको फ्लाइट में कुछ अनयूजुअल नजर ना आए, बट एक पायलट और कैबिन क्रू ट्रेनिंग इसी चीज के लिए करते हैं। अब इस प्लान्ड इवैक्यूएशन के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन और जनरल रीजन होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल लीक्स, जैसे हाइड्रोलिक फेलियर्स, मे बी फायर इन एनी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, टेक्निकल इश्यूज, इंजन फेलियर और मे बी अ बॉम्ब थ्रेट। अब इस सिचुएशन में पायलट्स कैबिन क्रू को एडवांस में इंफॉर्मेशन देते हैं लैंडिंग से कुछ देर पहले और ब्रीफ करते हैं अबाउट द 3 T's, दैट इज टाइम लेफ्ट फॉर लैंडिंग, type of terrain, that is land or water, type of door not to be used, and any other specific information or instructions, ताकि वो अपने आप को, कैबिन को और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेंजर्स को इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सके। अब कैबिन सुपरवाइजर बाकी सारे सेट ऑफ क्रू को सेम इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, एंड द फर्स्ट थिंग दे डू इज टू मैच द टाइम इन देयर वॉचेस सो दैट हर किसी को पता हो कितना टाइम बचा है। सिंस ऐसी सिचुएशन एक टाइम बाउंड चीज होती है और इवैक्यूएशन में हर एक मिनट बहुत ही कीमती होता है। नाउ कैबिन क्रू एक बार फिर से पैसेंजर को ब्रीफ करते हैं अबाउट द बेसिक डेमो व्हिच वी सी ऑन ऑल आवर फ्लाइट्स, जैसे कि सीट बेल्ट्स, ऑक्सीजन मास्क, नियरेस्ट एग्जिट, और साथ में उन पैसेंजर्स को ब्रीफ करता है जो इमरजेंसी एग्जिट रो पे बैठे हैं। दे ब्रीफ देम अबाउट व्हेन टू ओपन द एग्जिट एंड हाउ टू ओपन द एग्जिट, ताकि क्रू के कहने पे वो एग्जिट खोल के बाकी पैसेंजर के साथ बाहर निकल सके। Also, able-bodied passengers are briefed at this time and asked to help in evacuation. तो कौन होते हैं able-bodied passengers? So, able-bodied passengers are passengers who are physically fit and well-built. और cabin crew अपनी हर फ्लाइट पे at the time of boarding ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनको कि उनके able-bodied passengers कहाँ-कहाँ बैठे हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन में उन्हें टाइम ना वेस्ट करना पड़े टू फाइंड देम। गुड टू नो, राइट? कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों को पता था कि कैबिन क्रू के डेली रूटीन में एक ऐसी चीज भी होती है। बेसिकली इन शॉर्ट, एबल बॉडीड पैसेंजर्स जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन प्रोसेस में क्रू को हेल्प कर सकते हैं। नाउ ये सब करने के साथ साथ क्रू को कैबिन भी प्रिपेयर करना होता है फॉर लैंडिंग। हर कैबिन क्रू एक सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करता है कॉल्ड द प्रिपेयर्ड इमरजेंसी लैंडिंग ड्रिल, एंड माइंड यू ये सब हर फ्लाइट से पहले प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में भी डिस्कस किया जाता है। शुरुआत होती है बाय सिक्योरिंग द कैबिन, दैट इज ऑल लूज आइटम्स इन द कैबिन एंड गैली आर सिक्योर्ड, ओवरहेड बिन्स आर चेक्ड, कर्टन्स आर रिमूव्ड, लैबोरेटरीज को लॉक किया जाता है एंड ऑल सर्किट ब्रेकर्स आर पुल्ड आउट। कैबिन क्रू कैबिन को सिक्योर करता है और इंश्योर करता है कि पैसेंजर सीट बेल्ट्स आर फास्टेंड, ट्रे टेबल्स आर स्टोर्ड, seat backs are upright, all window shades are up, and also they collect the sharp objects like high heels, dentures, etc. Because किसी भी तरह का sharp object slide को पंचर कर सकता है and then it will be of no use and they won't be able to evacuate anyone from that door. Basically, एक safety demo दोबारा से दिखाया जाता है to brief the passengers again regarding their emergencies and their nearby exits to evacuate.
नाउ ये सब के बाद कैबिन सुपरवाइजर पायलट को इंफॉर्मेशन पास करते हैं दैट दे आर रेडी फॉर प्लान्ड इवैक्यूएशन. Now all the cabin crew take their seats in brace positions and revise their evacuation procedures again. Just before touchdown, pilot announce करता है Brace for impact. और ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही cabin crew passengers के लिए continuously command shout करते हैं. Brace, brace, heads down, stay down, stay down, stay down, stay down, stay down, जब तक aircraft रुक नहीं जाता. Remember, never open your seatbelt until and unless instructed by the cabin crew, as there can be more than one impact. As soon as the aircraft comes to complete stop, the captain gives the final go ahead and gives the command. Evacuate, evacuate. अब इस moment में everything happens very fast but is highly coordinated. Crew members open assigned exits, assess the outside conditions, and deploy the slides only if it's safe. हर क्रू मेंबर अपने डोर पे खड़ा होता है and they are shouting clear commands for the passengers. For example, open seat belt, remove shoes, leave everything, come this way, jump, 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 jump. They direct the passengers down the slide one after the other, preventing crowding or injury, using both verbal orders and body language. इमेजिन कैबिन क्रू सारे पैसेंजर्स और खुद को 90 सेकेंड्स के अंदर एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल देता है. इवैक्यूएशंस बहुत ही हाई स्ट्रेस सिचुएशन होती है, स्पेशली फॉर द पैसेंजर्स. दैट्स वेयर द इमोशनल कंट्रोल ऑफ कैबिन क्रू बिकम्स वेरी क्रिटिकल. Cabin crew are trained to calm passengers in panic, help the elderly or people with disabilities, carry infants down the slide. They instruct able bodied passengers to go down the slide first and stand one on either side of the slide to assist other passengers while coming sliding down. And they even physically redirect करते हैं उन लोगों को जो ऐसी सिचुएशन में अपना लगेज साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. Now, it is very important to understand here that in this kind of a situation, as passengers, you are supposed to leave everything behind and follow the crew instructions religiously. Trust me, even in chaos, cabin crew firm authority or compassion maintain करता है. Once all passengers are out, the job isn't done. हर क्रू मेंबर पूरे एयरक्राफ्ट को चेक करता है, right from the cabin to the washrooms, to ensure no one is left behind. उसके बाद ही सबसे आखिर में खुद उस स्लाइड से नीचे आता है. And this kind of courage is part of their duty, and they are trained to risk their own safety to protect others. Planned evacuations effortless लगती है, but ये एक intensive training का result होता है जो हर cabin crew अपने career में करता है to become the life savior at 36,000 feet. Mock evacuation drills in full-size simulators, door operation test, command voice training and scenario based problem solving. ये सब cabin crew की intensive training का part होता है. This is why even in real emergencies they respond with calm and confidence. They are not just servers in the sky, they are there for your safety. Cabin crew are trained to think fast, act smart and save lives. This brings us to the end of our video. But before I go, next time आपको किसी cabin crew पे गुस्सा आए क्योंकि आपको window seat नहीं मिली या अपने choice की meal नहीं मिली, just keep in mind you are shouting on a person who can save your life in an emergency situation. They are the first responders in uniform. Hope you learned something new today. If you like our efforts, please like, subscribe and share the video. And until next time, it's bye-bye.